In this session, we are going to start with exercise 3.3. We are using the Cambridge IGCSE Mathematics book, second edition by Karen Morrison and Nick Hamshaw. So, in exercise 3.3, question number 1, in the following diagram, name, and this is the diagram which we are going to follow. And initially, इसके अंदर we are going to look at अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, and we have a pair of equal angles and pair of supplementary angles. Let me introduce you to them first. Let's okay, it's fine. So अब इसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बताना है. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि कंबाइन होकर दो कोई ऐसे एंगल्स जो कंबाइन होकर 90 डिग्री फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग 90 डिग्री के लिए ऐसे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं और इस तरह से ये एक एंगल जो है वो बन गया. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? टू सच एंगल्स दैट व्हेन कंबाइंस दे फॉर्म द टोटल सम शुड बी 90 डिग्रीज. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये है एंगल लाइक दिस एंड लेट्स से दिस इज 20 degrees, okay, and then we are making another angle over here और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक it's 70 degree. And then you can see कि एंगल A जो है यानी फर्स्ट वाला एंगल प्लस सेकेंड वाला एंगल 20 प्लस 70 डिग्री इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. सो लेट्स नेम देम. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है. सो वी आर सेइंग दैट ABC, that angle ABC is complementary and CBD, both of them are complementary angles, right? This is the main idea behind the complementary angles. So if we look at this image, there are multiple complementary angles that has been given. So firstly अगर हम देखें ये उन्होंने यहाँ पे specify किया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, तो it should be ideal कि अगर हम लोग ये वाला लें तो it will be E B F and F B C, just like here. So A का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? A will be, let me just write the answers over here. Okay, so A is going to be E B F and FBC. Okay, so about this, now we have to look at a pair of equal angles. So a pair of equal angles, that means कि जो एंगल एक साइड पे है वही एंगल दूसरा हो. वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. सो फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो ए बी ई, ये अगर ये ए बी ई और ई बी सी, अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री ही होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स, वी ऑल नो दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज सम इज टोटल 180 डिग्री. तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. तो वी कैन से ए बी ई एंड ई बी सी आर इक्वल एंगल्स. वी कैन गो फॉर सम अदर एग्जांपल. फॉर अगर हम लोग इसके अलावा जाते हैं, वी कैन सी कि डी बी और ए जो है, डी बी ए जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है सी बी जी के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्रिस क्रॉस, जहां पर भी हमें ऐसे इस तरह का बिहेवियर नजर आया ना जहाँ पे एक्स बन रहा हो, क्रिस क्रॉस बन रहा हो लाइक दिस, यू कैन सी ओवर दिस. अगर मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, सो लुक एट दिस, दिस इज मेकिंग अ क्रॉस. तो ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. सो वी कैन सी फॉर बी पार्ट डी बी ए एंड CBG are going to be the pair of equal angles. We can write any single angle. उन्होंने पेयर का है, not pairs. So हमें एक पेयर काफी है. उसके बाद उसने कहा a pair of supplementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री सम उनका 90 डिग्री पे कंपोज करता है. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जो सम है, सम शुड बी 180 डिग्रीज, यानी कि कुछ ऐसे एंगल्स जब हम उनको कंबाइन करें दो मुख्तलिफ एंगल्स को, तो इट शुड मेक, फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास एंगल बन गया है लेट्स से 30,
ठीक है. So what will be the rest of angle? This will be 150 degrees. So these two are a pair of supplementary angles, right? So in this question, हमें multiple straight lines नजर आ रही हैं. We can say DG is the straight line, AC is a straight line. तो इसके ऊपर कोई भी जो दो angles है ना, we will take up and we will write them down. So let's say अगर हम लोग देखें ABD, ठीक है, and DBC, वी कैन एक्सक्लूड दीज, इनको हम भूल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक ये एंगल ABD वाला और DBC वाला, क्योंकि ये कंबाइन होकर एक 180 डिग्री बना रहे हैं. इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर कोई और देख लें, फॉर एग्जांपल, हाँ, इसको भी हम देख सकते हैं, जैसे ABE 90 डिग्री एंड EBC, ये भी तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस करते हैं तो 180 डिग्री बन जाता है. So it can be any angle. So let's just write ABE and EBC. It would be a fun practice if you find out multiple angles, multiple supplementary and complementary angles. Okay, let's look at D part. A pair of equal angles. The angle, oh sorry, I forgot. This is the D part. The angles on line DG. So DG line के ऊपर जितने angles हैं, you are going to state them. For example, हमारे पास multiple options है. हम कह सकते हैं DB, ये देखो, एक let me highlight it with this color. Okay, DBE, DBE, and EBF, and FBC, and FCBG. So these are the four angles which are on line DG. ठीक है, पर इसके अलावा और भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम लोग ये वाला थोड़ा लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं DBA and BAC, BAG. ठीक है, इस तरह भी हमारे पास ये दो एंगल्स होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा. लेट्स गो फॉर द शॉर्टर मेथड, और हम लोग थोड़े वाले लिख लेते हैं. So it is going to be DBA and ABG. ABG. Okay, and then E, the complement of angle EBF. The complement, इसका मतलब है कि जो EBF के साथ जो एक X एंगल ऐड होगा, it should be equal to 90 degrees. So the complement of EBF, इसका complement हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास FBC. ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये एक वाहिद एंगल है जो इसके साथ कंबाइन होकर 90 डिग्रीज बना रहा है. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर E? FBC. Similarly for F part, the supplement of angle EBC, यानी EBC प्लस जो अननोन एंगल है, it should equal 180 degrees. यानी अब हमने स्ट्रेट लाइन देखना है EBC, तो अब इसका मतलब क्या है, EBA, ये वाला एंगल, ये सारा एंगल होगा ना. अगर ये 90 डिग्री है तो ये सारा 90 डिग्री होगा, ताकि फिर ही जाके वो 180 बनाएगा. तो EBC प्लस EBA, तो EBA will be the answer for this question. Now let's look at question number 2. In each diagram, find the value of the angles marked with a letter. अब हमने इनमें क्या करना है, अब हमें मुख्तलिफ एंगल्स को फाइंड आउट करना है. लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन सॉल्व देम ओवर देयर. अब यहाँ पर जितने भी नजर आ रहे हैं एंगल्स, अब ये 180 डिग्री है ना, तो अब हम लोग इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे. Let me just paste it over here. Okay, that's fine. So let me just zoom in a little bit so it's clear. All right. So if we look at this first example, it is हमें पता है sum of angles on a straight line जो होता है वो 180 होता है. So this means this hole has to be 180 degrees. This hole is going to be 180 degrees. So if total is 180 degrees and we know this part is 112, so we are minusing 112, that will give us x. Or you can also say that 112 plus x is equal to 180 degrees, and then you are moving 112 on the right hand side and 180 minus 112, and that will be your answer, which is going to be 68 degrees. For B part, we know that this entire part is 180 degrees because this is a straight line,
and this part is 90 degrees. So if this is 90 degrees, that means कि we are left with the leftover 90 degree. तो अब leftover 90 degree इसका क्या मतलब है, x plus 50 is equal to 90. ठीक है, इतना सा पार्ट तो 90 है ना, तो हम कह सकते हैं ना ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट कंबाइन होकर 90 बनता है. तो हम कह सकते हैं 90 minus 50, that is going to be x is equal to 40. Okay. For part C, we have this angle. It looks confusing, but don't get confused. We have just seen कि जब vertically opposite angles हो तो हम उनको कैसे treat करते हैं, वो आमने सामने वाले equals होते हैं. So we can see a cross over here, right? A cross over here. Now all you need to see is कि अगर ये 115 है तो इसका opposite वाला y भी 115 होगा. So we can already tell that y is equal to 115 degrees due to vertically opposite. मैं अभी यहाँ पे सिर्फ cross लगा रही हूँ, that means vertically opposite. Alright, and for the x, how can we find that? We can see that regardless of x, it is one straight line, right? It is a straight line. This part is 150 degrees, 115 degrees, and this part is x. So we can say that 115 plus x is equal to 180 degrees, and when we will subtract 115 from 180, we will be left with 65 degrees, and that will be x. Alright, for D part, we know that this is 57 degrees, this is y, this is x, this is 121. This looks complex, but don't get confused. I'll just zoom in a lot so that you don't get confused or feel overwhelmed due to other parts. सबसे पहले आराम आराम से देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और हम किस तरह से उन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. We can see a cross over here. Right, let me highlight it so it's easy for you to see. This is a cross that we can see. So if this is a cross, that obviously means that y is equal to 57. After that, we can also see that this is 180 degrees and this part is 121. So what will be this part? So this is a straight line. This is a straight line, and we can say that 180 minus 121 is equal to x, or we can also say that x plus 121 is equal to 180 degree, और फिर हम लोग उसको साइड पे लेकर जा सकते हैं, and that will give us that x is going to be 59 degrees. All right, for now look at E part. This is easy. These are not difficult as much as you think. So why look at this now. Only put your attention on a certain x. So now see कि इनके अंदर कौन से cuts आ रहे हैं जिनके अंदर दोनों values आ रही हो. Look at this. ये y and look at this 82 degrees. इसका मतलब है ये दोनों equal हैं. So we can easily state that y is equal to 82 degrees. Alright. Now let's move on to other things. What else we know here? We also know that this is 82 degrees, this is y, but we don't know x over here, we don't know z over here. And how are we going to find it? हमें अब एक चीज ये भी देखनी है कि हमारे पास ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. ये जो अभी येलो हाइलाइटेड है, this is also a straight line. So we know this part, we know this part, we just don't know this part. ये part नहीं पता, हम इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. 82, let me switch to another color. 82 plus 82 plus x is going to be 180 degrees, right? So x will be finally 180 minus 82 minus 82, and then finally x is going to be 16 degrees. So we can say this is 16 degrees, this is 82 degrees. Now we also know this part, and now we can already see another line over here.
this is another 180-degree line. Now we can see हमारे पास ये भी available है. Now we have also this one. We don't have this one. There's one possibility. There's actually um okay. There's actually two possibilities around there. या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 180 डिग्री से माइनस करके करें, ठीक है. और another possibility which is an easier possibility over here is कि हम लोग देखें कि ये भी तो एक क्रॉस है. अगर ये क्रॉस है and we know this is 16, this is 16, then obviously z is also going to 16. Z is also 16 due to vertically opposite angles, and ये भी vertically opposite की वजह से था. So this is how you are going to solve this. This looks complex, but it is not. Now let's move on to F part. So okay, this is 90 degrees. This is why we don't know, and we know this one as well. So let's do first things first. I'll just make outline of this that I'm talking about this line. Okay, you just know already that I'm talking about this line. So we know this is 90, this is 47. 90 plus y plus 47 is going to be 180 degrees, right? So if 90 plus y plus 47 is equal to the 180 degree, that means 180 minus 90 minus 47 will be the answer. So 180 minus 90 is 90. 90 minus 47 is, let me calculate. Okay, it is 43 degrees. Alright, so we can just mark it 43 degrees. This is 90 degrees. Writing it just in case. Okay, so now we don't know x and we don't know z, but we know that we can see a cross over here, right? We can see a cross over here. So that means x is equal to 47, right? And now look at this. We don't know z yet. What about z? Can we do anything about z? If z is here, that means what are we going to do? We don't know about that. So let me erase a little bit so it's not as much messy. Actually, it's actually taking a lot of time to remove the extra details. Okay, all right. So now you can see, now we have to find, this is 47 degrees. Now we need to find the z. For finding z angle, we can see that this is a straight line, this is what we know, and this is what we don't know. So in simply what we are going to do is x plus z is equal to 180 degrees. And we can also see that x is 47 and z is something we don't know yet. So basically we're just going to do 180 minus 47, and we will be getting the final answer, which is going to be 133 degrees. And we got this from knowing that angles on a straight line is equal to 180 degrees. All right, so now this is a very simple question. This is a straight line, this is actually an envelope. All right, but we can see this is a straight line as well, and on the straight line we have x, 72 and 51. So we know that we need to minus them from 180 degrees, and we are left with the answer, which is going to be 57 degrees. So x is 57 degrees. Question H part. Okay, we have this angle, this is 90 degrees, and we know this is x, this is 19. So we can say that x plus 19 is equal to 90, and 90 minus 19 is going to be 71. Now let's
look at the I part. In this one, we can see that we have this angle. Okay, we can look at this line at first. Now see, we have x and 142 degrees. So we can say that 142 plus x is equal to 180 degrees. So x में से 180 minus 142 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38 degrees, and that will be the answer. You see, at times we don't know, this was unnecessary, we didn't know this, we didn't need this, but sometimes they will add some things just to confuse you more, but इसकी ज़रूरत नहीं थी. It was an unnecessary angle that was provided. So so you see, we have completed these horrible and scary questions so easily, and they weren't as much tough as we expected them to be. Okay, question number 3, find the value of x in the following figure. Okay, now we don't know the values much, but we know कि उनके क्या क्या जो है x उन्होंने कुछ कुछ हमें वैल्यूज दी हैं और कुछ कुछ उन्होंने हमें नहीं दी हैं. ओके, तो अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं. अब हमें उसने हमसे एंगल नहीं मांगा, उसने हमसे कहा है कि आपने एक x की वैल्यू सिर्फ बतानी है. अब जैसे 5x भी उन्होंने एक एंगल में दिया हुआ है, तो इट वेरीज. नाउ अगेन वी लुक एट this is a straight line. We know that x plus 5x is going to be 180 degrees. Then we know x plus 5x is equal to 6x is equal to 180 degrees. And then we are dividing 6 with 180 and we are left with the answer that is going to be 30 degrees. तो हम लोग कह सकते हैं x is equal to 30 डिग्री. उसने सिर्फ x की वैल्यू कहा है तो हमें ये नहीं बताने की जरूरत कि 5x को क्या आंसर आएगा. Now this question, this is 90 degree total. So we can say x plus 2x plus 45 is equal to 90 degrees. X plus 2x is equal to 3x plus 45 is equal to 90 degrees. And 3x is equal to 45. Why? क्योंकि 90 में से 45 को माइनस कर दिया. And now we are going to do this. X is equal to 45 over 3 and we are getting the final answer, which is 15. So x is equal to 15 degrees. Alright, for C part, we have this whole angle and we know कि पूरा sum of पूरी rotation जब होती है, one rotation is 360 degrees. So we can say x plus 4x plus 150 plus 2x is going to be 360 degrees. X plus 4x plus 2x. 4 plus 1, 5. 5 plus 2 is 7x. 7x plus 150 is equal to 360 and 7x will be here. 360 minus 150. X is equal to 210 divided by 7 and we will get the final value. X is equals to 7 3s are 21, so x is equal to 30 degrees, right? So we got the answer for this question as well. Question number 4 says two angles are supplementary. Okay, that means उनकी combination जो है वो 180 degree का बन रहा है. ठीक है, sum जो है, the first angle is twice the size of the second. यानी जो first angle है वो दूसरे angle का double है. We can say x और फिर उसका वो क्या है 2x, यानी वो उसका twice है, एक एंगल का twice है, that is equal to 180 degrees. So we can say 3x is equal to 180 degrees and x is equal to 180 divided by 3 which is going to be 60. So अगर एक एंगल 60 है उसका जो twice क्या होगा 2 into 60, that is going to be 120 degrees. तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे 60 and 120 degrees. And we can also check them up के 60 plus 120 actually 180 degrees ही बनता है. Question number 5. One of the angles formed when two lines intersect is 127 degree. What are the size of the other three angles? So they are basically saying कि एक लाइन है ऐसी और उसको एक इंटरसेक्ट कर दिया है,
यू कैन सी, और वो कहते हैं कि ये एंगल जो है ये है 127 डिग्रीज है। नाउ if you look closely you can see this is basically a cross, so that means अगर हमें उसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये क्वेश्चन कहता है कि एक एंगल मैंने बनाया है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं आपस में और वो 127 डिग्री बनाती हैं, और बाकी ये वाला क्या क्या एंगल्स है। यू कैन सी कि अगर ये 127 है तो इसका ऑपोजिट जो होगा ये भी 127 ही होगा। Now, how will we find this angle? We can we have two ways to solve this. एक तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो वी कैन सी कि हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 180, ठीक है, we will get the answer 53 degrees. This is 53 degrees and then this is going to be also 53 degrees. इसका अदर वे जो मैंने बताया था वो यही होगा कि हम लोग टोटल देखें कि अगर ये 127 है और ये भी 127 है तो हम लोग इनको ऐड कर दें और हम इन दोनों की वैल्यूज को एज एन एक्स एक्स सपोज करके 360 टोटल कंसिडर करके उसमें से निकालें, विच इज़ अ लॉन्ग वे, पर एक और पॉसिबल वे है, ठीक है, पर दिस इज़ अ शॉर्टकट एंड एन ईजी मेथड। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है दैट फिनिशेस